So now I am moving to the formally to the Reynolds transport theorem. Now be very careful. This is a very subtle concept, and this is actually the basis of entire and every theorem that you will study. So please be very careful. So I am taking, say, this green part, जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये मान लीजिए सिस्टम था एट टाइम t. Say this is a system at time t, and this is also the control volume at time t. So what does that mean? इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ये कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कुछ फ्लूइड पड़ा, तो कंटेनर क्या हो गया? कंट्रोल वॉल्यूम, yes sir. and fluid is the system. Are you clear? Because I am only concentrating on say system, then system क्या है? जो इसके अंदर fluid present है, and control volume क्या है? मैंने given volume को मैंने specify कर दिया, that is control volume. So at time t, control volume and system are coinciding. Are you clear? That means control volume is just a particular volume of chunk that we will be examining. Say, so that will become much more clearer. That is the particular chunk that you are analyzing. What I am saying is, say I take a nozzle like this, say fluid at time t, there is fluid in this. So I want to analyze this fluid. So this is system. At time t, the system is actually occupying the entire control volume. Are you clear? सर सिस्टम क्या होता है? मतलब कि बेसिकली जो हम मतलब जो हमने फिल कर रखा है, मतलब लिक्विड वगैरह, मतलब सिस्टम है उसका, जो उसके अंदर मास है, जो मास है, जो उसके अंदर फ्लूइड है बेसिकली. सर तो सिस्टम तो मतलब पूरा वही नहीं हो जाएगा? मतलब जो चीज हम ले रहे हैं, मतलब वेसल वगैरह. नहीं, हम मैं वही कह रहा हूं. जैसे मान लो एग्जांपल मैं बोल लूं, से दिस वाज, से एग्जांपल, वेट फॉर अ सेकेंड, से आपने फ्रूटी सुना है? फ्रूटी जो मैंगो ड्रिंक है. यस सर. तो मान लो कोई भी मैंगो ड्रिंक है, तो उसके अंदर जो मैंगो जूस है दैट इज सिस्टम, और जो उसका बाहर का ये टेट्रा पैक है वो क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम. यानी क्लियर है? अब ये स्ट्रॉ में से आप जूस पीने लगते हो, तो कंट्रोल वॉल्यूम में से सिस्टम मूव करने लगेगा. यस सर. आप मेरी बात समझ रहे हो? सिस्टम क्या है? मैंगो जूस. कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? जिस पैक के अंदर ये है. तो जब आपने स्ट्रॉ इसमें नहीं डाली थी, तो सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम एक ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे थे. यस सर. क्लियर है? यस सर, क्लियर है. और जब मैंने इसको होल्ड करके स्ट्रॉ से पीना स्टार्ट कर दिया, तो सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर जाना शुरू हो गया. हाँ जी, क्लियर है? यस सर. Now with this background, I am coming to the original
figure now. Say at time t, this green part, ये यहां तक होगा. This green part represents system as well as the control volume. At time t plus delta t, the fluid or the system has moved to this location. कंट्रोल वॉल्यूम वहीं पे रह गया. यानी क्लियर है? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टू एनीवन? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? सर क्लियर है. Clear? So this is the location of system at t plus delta t. Now let me know, or what is the location of control volume at t plus delta t? What is the location of control volume if it is fixed in space? सर कंट्रोल वॉल्यूम तो वहीं पे रहेगा ना जहाँ पहले था. हाँ, तो वहीं पे अगर कंट्रोल वॉल्यूम इज नॉट मूविंग देन कंट्रोल वॉल्यूम इज देयर ओनली. तो सिस्टम at t is this, system at t plus delta t is this blue part, and control volume at t is this green part, and control volume at t plus delta t is also this green part. And clear? Any doubts? Now this is the situation at t, and this is the situation at t plus delta t. So if I ask you n system at time t can be written down as what? n system means वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम में एट टाइम टी किसके बराबर थी? आप इसको मास मान के चल लो दिमाग में. तो टाइम टी पे मास ऑफ सिस्टम किसके बराबर था? कंट्रोल वॉल्यूम. n of कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम टी, और ये किसके बराबर होगा? n1 प्लस n2 एट टाइम t. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टू एनीवन? यही सारा जो होगा मास. सर n1 n2 सर कंट्रोल वॉल्यूम का है कि सिस्टम के लिए? देखो जो ये ग्रीन पार्ट था, ये फ्लूइड इसके अंदर ही था, तो कंट्रोल वॉल्यूम और सिस्टम सेम थे, क्योंकि जितना सिस्टम था हमको पता है फ्लूइड सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, ये तो पता है आपको. तो मान लीजिए इसके अंदर 1 kg था कुछ, अगर मास बोलूं मैं, इसके अंदर 1 kg था. इस बॉक्स के अंदर 1 kg था वाटर. ठीक है? तो कुछ देर के बाद ये टाइम टी पे था, तो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर भी कितना मास था? 1 kg था. कुछ देर के बाद यहां पे एक से फ्लूइड फ्लो करा और फ्लूइड यहां पे पहुंच गया कुछ, तो टोटल फ्लूइड क्या हो गया? जो यहां से कम हुआ और जो ये ऐड हुआ. हाँ जी, क्लियर है? यस सर. तो टाइम टी पे टोटल मास कितना हुआ, या कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कितनी हुई सिस्टम की? 1 प्लस 2. इतना अमाउंट था इसके अंदर. इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर. Clear? So what about this was at time t? What about at time t plus delta t? What about time t plus delta t? n system time t plus delta t.
किसके बराबर लिख सकता हूं? हाँ जी, किसके बराबर लिख सकता हूं? n2 plus n3. n2 plus n3. n3. क्लियर है? at t plus delta t and this also t plus delta t. Any doubts to anyone? किसी को कोई भी डाउट? So please, if you have any doubts, please ask me, because this is very important and this is critical if you want to understand Navier-Stokes equation and conservation of energy, that is Bernoulli's equation and all that stuff. So I'm writing down here again. So at time t, n system, that is at time t, is equal to n1 at time t plus n2 at time t. And also I know that n system at time t is equal to n control volume at time t. Any doubts in this? Now at time t plus delta t, n system t plus delta t is equal to n2 t plus delta t plus n3 t plus delta t. And n control volume, what should be n control volume at t plus delta t equal to? What should be the control volume at t plus delta t equal to? n1 plus n2. n1 plus n2, or I can write down this as n control volume, or n1 at t plus delta t plus n2 at t plus delta t. Clear? Any doubts? Any doubts to anyone? Now, I know that n system at t plus delta t is equal to n2 t plus delta t plus n3 t plus delta t. Now, can I write down this term in the form of like this? I am writing down here n control volume t plus delta t minus n1 t plus delta t. Let me know this is clear or not. I am substituting n2 t plus delta 2 t, that is this thing, with what? N control volume t plus delta t minus n1 t plus delta t. हाँ जी, क्लियर है ये? एनी डाउट्स टू एनीवन? किसी को कोई भी डाउट है स्टेप में? क्लियर? Yes, sir. So I am writing down here, I want to define dn by dt system. What should I write down here? Limit delta t tends to 0. What should I write down here? N system at t plus delta t minus n system at t divided by delta t. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? Now I can substitute the value of n system t plus delta t and n system t here. So what do I get finally? I get n control volume at t plus delta t minus n1
at t plus delta t, और क्या यहां पे रहता है n3 t plus delta t, that is positive, n3 t plus delta t minus, now I'm taking this term, minus what is n system t? It is equal to n control volume t. So this becomes minus n control volume at t. Everything is divided by delta t, and in the limit delta t tends to 0. Any doubts to anyone? वो क्या लिखा हुआ है आपने? एन कंट्रोल वॉल्यूम 1 लिखा है सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट ये में। वाला इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर बस। हाँ, इसमें पहला वर्ड, इस लाइन में पहला वर्ड। ये अच्छा, ये हाँ ये वाला CV1 लिखा है ना ये। एन सीवी, ये मैं कॉमा डालता हूं। 1, हाँ ठीक है, 1 तो कुछ भी नहीं है सीवी में, सिर्फ 1 और 2 तो n1 n2 में। सो n कंट्रोल वॉल्यूम एट t प्लस डेल्टा t, जो हमने ये निकाला था, माइनस n1 t प्लस डेल्टा t। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर आयुष? यस सर। So what do I get finally? I can take, now please try to see, I can take this term and this term divided by delta t as limit that tends to 0. What do we get? Limit delta t tends to 0, n control volume at t plus delta t minus n control volume at t divided by delta t minus n1 t plus delta t upon delta t. What else? Plus n3 at t plus delta t upon delta t. So this is in brackets because limit delta t is tending to 0. Now can you tell me what is this term equal to? 0। Why 0? The n control volume at time t shall be equal to n control volume at time t plus delta t. What is n? Any mass or momentum or anything that we have taken into constraint. तो अब मुझे बात बताइए, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. So this was a funnel and this was filled up till this. So this was time t. आपने इसको होल कर दिया और टाइम t प्लस डेल्टा t पे इसका लेवल जो है वो यहां पे रह गया. So this is at t plus delta t and this was the level at t. तो कंट्रोल वॉल्यूम इसमें क्या है? दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम. तो कंट्रोल वॉल्यूम में मास टाइम के साथ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट इज एन? एन इज सम प्रॉपर्टी. इट कैन बी मास, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, एंट्रोपी. So please remember, NCV does not mean the control volume. NCV means the amount of that property in that control volume. अगर ये मास है तो मास कितना हुआ, t प्लस डेल्टा टी पे कितना था और t पे कितना था, तो ये 0 तो नहीं होगा. हाँ जी, now you got it. So then system and उसमें difference ऐसे कैसे आएगा? मतलब like in that case if we take mass, then the fluid, the system shall be always equal to the control volume. The system should not, you are not getting my point. For instance, if I ask you, say, again I told you, say this was the container which was containing some juice. Say Yes, sir. you had a straw here and this is your mouth. So at time t, this was at t plus delta t और ये था टाइम t पे. तो
तो इसमें मान लीजिए 100 ml था पहले जूस, ठीक है। अब इस कंट्रोल वॉल्यूम में 100 ml था, इस कंट्रोल वॉल्यूम में भी क्या है, अब इस मान लो इस कंट्रोल वॉल्यूम में 100 ml था जूस, पहली फर्स्ट केस। अब आपने इसको सक करना स्टार्ट कर दिया। अब कुछ जूस इसमें होगा, मान लो 80 है, 20 आपके माउथ में होगा, यस सर, ठीक है। तो सिस्टम तो मूव कर गया, कुछ पार्ट उसका यस कंट्रोल वॉल्यूम में रह गया, कुछ पार्ट कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर चला गया। यस सर, तो टाइम टी पे जितना सिस्टम में था वॉल्यूम, उतना ही कंट्रोल वॉल्यूम में वॉल्यूम था। यस सर, टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे जितना सिस्टम था कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब जितना कंट्रोल वॉल्यूम में वॉल्यूम था वो टी के बराबर तो नहीं है, यस सर। अब तो 80 रह गया ना। So that means NCV or CV are two different things. एन NCV, when we are mentioning NCV yes, at T plus delta T, that is different, and CV is itself a different. एन सी वी इन टी इज डिफरेंट। एन सी वी दैट इज सर मास इन कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम टी। Okay. सर आप Yes. एनसीवी से कहना क्या चाहते हो, मतलब कि मतलब कंट्रोल वॉल्यूम में कितना मास है मतलब टी टाइम पर? हाँ, जो एन है वो मास भी हो सकता है, आप मास से सोच के देख लीजिए अभी तो। ठीक तो है एन सी वी एट टी का मतलब क्या है, Mass in the मास इन control. कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम टी। सर। लेकिन फिर आपने सर नीचे एक लाइन लिखवाई थी कि एन सीवी एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू एन वन एट टी प्लस डेल्टा टी प्लस एन टू एट टी प्लस डेल्टा टी। तो सर इसका क्या, ये तो फिर उल्टा नहीं कहां हो से, गया सर दोबारा से मतलब? बताओ कहां पे, सर आपने पता नहीं नीचे लिखवाई सर, ये एक मिनट सर, कौन सी, हाँ ये ये वाली? ये नीचे है सर शायद। मेरे को एक मिनट बताना कहां पे, कौन सी वाली, ये नीचे है सर। विच वन? नहीं ये भी नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ, मैं कॉपी में लिखी हुई है सर अभी, एन सी वी टी प्लस डेल्टा टी एन सी वी टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू एन वन एन वन एट टी प्लस डेल्टा टी टी प्लस डेल्टा टी। प्लस एन टू एट टी प्लस डेल्टा टी। हाँ ठीक है। सर इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कंट्रोल वॉल्यूम टी प्लस डेल्टा टी पर भी हमने एन वन प्लस एन टू माना है, एन मतलब वन प्लस कंट्रोल एन टू वॉल्यूम हमने मान फिक्स लिया, कर लिया। तो फिर लेकिन वो एन वन एन टू हाँ टी सर, टी प्लस डेल्टा टी भी तो डिफरेंट है ना। जैसे आपने इस कंटेनर से आपने, मैं यहां पे बता रहा हूं, आपने इस कंटेनर से कुछ पी लिया, तो पहले लेवल मान लो यहां तक था, एग्जांपल यहां तक लेवल था इसका, ये टी पे था। आपने जब कुछ पी लिया इसमें से, लेवल ये रह गया। यानी क्लियर है? सर सर लेकिन आप मतलब मास ही मान रहे हो, मतलब सब मतलब खाली मास ही नहीं, बस सिस्टम ले रहे हो मतलब आप बस खाली इसमें मतलब। मैं आपकी बात नहीं समझ रहा, अब मैं ये सिंपल कह रहा हूं, फिर जब मैं मैं सर मैं लिखता हूं एन सी वी एट टी प्लस डेल्टा टी, इसका मतलब क्या होता है कि उस कंट्रोल वॉल्यूम में कितना मास है, जब एन को मैंने एम मान लिया। अब इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो, मान लो आप इस सारे को आप ऐसे लिख देते, ये मान लो ये वन होता, ये टू होता, तब भी क्या होता, एन वन प्लस एन टू एट यस एट टाइम टी। मान लो जब पूरा फील्ड था तो एन कंट्रोल वॉल्यूम टी पे क्या था, एन वन प्लस एन टू। क्लियर है? यस सर। अब मान लो ये वन पार्ट का कुछ पार्ट चला गया बाहर, तो इसमें तो कुछ पार्ट कम रह गया, तो अब भी तो एन कंट्रोल वॉल्यूम एट टी प्लस डेल्टा टी किसके बराबर लिख सकता हूं, एन वन का मतलब क्या हुआ, जो मास इस रीजन में प्रेजेंट है, अगर इतना ऊपर ही चला गया तो इस बार क्या हुआ, एन वन एट टी प्लस डेल्टा टी कितना रह गया, 0, अगर पूरा ही चला गया होता। यस सर। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। सो दैट मीन्स प्लीज रिमेंबर, एन जब भी मैं लिखता हूं, इट मीन्स मास, मोमेंटम, एनर्जी, एंट्रोपी, एनीथिंग।
And when we say in case of mass मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मास के केस में आप उसको फिजिकली इमेजिन कर सकते हो. तो when I say n control volume at t plus delta t, it means the mass within the control volume at t plus delta t. And that's why this term will not necessarily be zero. इससे भी समझ आ रहा है कि जब कुछ पार्ट नीचे चला गया तो this is not equal to this. This is changing. हाँ जी, clear है? Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट प्लीज आस्क मी. Should I move forward because I want to complete this? Do you have lecture? Otherwise, I will. It will take 5-7 minutes only. ले लो. हाँ जी, I am continuing with this. तो यहाँ तक clear है? किसी को doubt? Any doubts to anyone? So I am writing down here for clarity so that. So it was dn by dt system is equal to limit delta t tends to 0 n control volume at t plus delta t minus n control volume at t divided by delta t minus limit delta t tends to 0 n1 upon delta t at this was at t plus delta t plus limit delta t tends to 0 n3 by delta t, this was at t plus delta t. यहां तक clear है? Any doubts to anyone? Any doubts in this equation? Then what is this equal to? What is this equal to? What is this equal to? dn by dt. What should I write down? Control volume. हाँ जी, clear है? Any doubts? Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? And what is this? What is this? If this was the original one, this was at t plus delta t. So this is 1, this is 2, this is 3. So what now? Let me know, as delta t tends to 0, n1 at t plus delta t becomes equal to what? N of system. It becomes equal to what? That is something that is just entering the control volume. When delta t tends to 0, तो red और blue क्या होंगे? When delta t tends to 0, almost Coincides. they will almost coincide. तो जो n1 होगा वो क्या होगा? सिस्टम के बराबर सर. सिस्टम के बराबर नहीं, n1 पूछ रहा हूं. n1 का मतलब हुआ सिर्फ, तो ये क्या होगा? जो जस्ट इस पूरे सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम को एंटर कर रहा है लेफ्ट साइड से. हाँ जी, समझ रहे हैं आप? मान लीजिए ये था इनिशियल, सॉरी ऐसे इसको कर देते हैं. मान लीजिए ये था इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से था. तो दिस वॉज एट t एंड दिस वॉज एट t प्लस डेल्टा t. ये सिस्टम की बात बता रहा हूं. तो जब डेल्टा t टेंड्स टू 0, इट मींस this blue part was actually occupying this red space. and ये तो clear है? and clear? And then this one part is the part which was just entering at that instant in time. So this represents actually
influx to the control volume. And likewise, this 3 represents the efflux, matlab going out of the control volume. Is that clear or not? So this will become clear from this physical example. If you see, so this was a tub of water, say 10 kg per second was flowing through this tap into this tub, and there were 3 holes, and say 1 kg per second, 2 kg per second and 3 kg per second were flowing out of this tub. And you clear hai? Now let me know what is the change that is happening in this tub. That is, if I say dN by dt control volume, this is the control volume. इसमें मास चेंज होने का क्या रेट है? What is the rate of change of mass in this? 10 kg per second आ रहा है, 3, 2 और 1 निकल रहा है, तो इसमें कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है मास कंट्रोल वॉल्यूम में? 4. हाँ जी, 4. तो कैसे निकाला आपने? इनलेट माइनस आउटलेट. इनलेट माइनस आउटलेट. और इसके अंदर मैं बोलूं सिस्टम का मास कुछ चेंज हो रहा है? सिस्टम क्या हुआ? इसमें भी 10 kg पर सेकेंड था, इनको जोड़ के भी 10 ही रहा, तो dm by d system, d by dt system in case of mass should be equal to what? 0. Now look at this expression. This is rate of change of mass within the control volume. This is rate of change of mass of the system, which in case of mass is 0. So rate of change of mass in the control volume is equal to what? Influx minus efflux, जो आपने इस टब में भी देखा. So this is just a common sense. So rate of change of mass within the control volume will be equal to what? Rate at which the fluid is entering the control volume and the rate at which the fluid is exiting the control volume. So I get dN by dt system is equal to dN by dt control volume minus influx plus efflux. And I know that in case of conservation of mass, this is 0. So I get dN by dt control volume, or I should write down dm by dt control volume should be equal to influx minus efflux. And that is what you got in this tub example. That is rate of change of mass within the control volume is equal to what is entering the control volume and what is exiting the control volume. And any doubts to anyone? Any doubts to anyone? So when we are talking about system, dN by dt of the system, so the system includes the grains that are being added. Yes, And system means the fluid itself. yes, sir. So that is not changing with respect to time. Mass is not getting converted to anything. Yes, sir. System Yes. remains the same. तो जैसे आपको एक एग्जांपल भी है इन सिंजल, इट इज वेरी गुड कि आपके पास अगर कोई डीओ की बोतल है, दैट इज यू हैव अ डिओड्रेंट और परफ्यूम, तो इसमें कुछ फ्लूइड था, इसमें परफ्यूम था, आपने इसको प्रेस कर दिया, परफ्यूम बाहर आ गया. Yes, sir. तो अगेन द सिस्टम इन्वॉल्व्स the perfume within the bottle as well as the perfume that has gone out. So system has not
change with time. Yes sir. क्योंकि हमने सिस्टम को क्या माना है, हमने पूरे मास को मान लिया, और वो मास तो खत्म नहीं हो रहा है जब तक हम वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पे नहीं जा रहे हैं. Yes sir, exactly. Any clear है? Yes sir. So we have this final expression I'm writing down here, and then I will break for today. dN by dt system is equal to dN by dt control volume plus, I'm writing down here, and we will discuss this how it has come. As of now I'm writing down here. I still need to explain this, but this in a sense is equal to efflux minus influx, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है. बस efflux minus influx को हमने इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया, and that we will get to know how. So this is the Reynolds transport theorem, and N can be mass, momentum, energy, angular momentum, entropy. So you know the Lagrangian law, that is for a system. You can convert this into a corresponding Eulerian law, and this is the correction term that you need to account for to convert from Lagrangian to Eulerian. That is in a sense the Reynolds transport theorem, and we will get to know how to calculate and why this term is there. So I will break for today. If you have any doubts, please ask me, otherwise I will end the meeting now. So dN by dt will be always equal to 0, as all the conditions that we have taken are from the conservation itself. So please remember, when N is m, that is mass, then dN by dt system will be 0. Momentum can change. Momentum में क्या होगा? Velocity change हो जाएगी. So dN तो क्या होगा basically? What will be this term equal to? It will have some. dP by dt किसके बराबर होती? Sum of all forces. Sum of all forces, yes sir. So this will not be equal to 0 because body is in. Yes sir. Body is moving. Got it sir. Clear? So this term on the left hand side will only be 0 in only one special case, that is conservation of mass. In all other cases it will not be 0. Okay sir. Clear? Yes sir. So I am breaking for today. We will continue with this in the next lecture. Okay then. Thank you sir. Okay.